Good afternoon, students. Welcome to the lecture number 3 from the chapter of electric charge and field. And today we will be having a discussion on the Coulomb's law. Now, the Coulomb's law is basically it's a quantitative statement for calculating the force between the 2 point charges existing in a particular medium. Now, in the Coulomb's law, we have ignored the size of the charged object and we have considered them as the point objects. This is the assumption which we have taken in the Coulomb's law. And the force of attraction or repulsion is given by this formula, that is equal to 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square, where epsilon is equal to epsilon naught into एप्सिलॉन आर. यहाँ आपने देखा है कि यहाँ पर मैंने मॉड लगाया हुआ है Q1 एंड Q2 मीन्स ये दोनों चार्जेस अगर आपके मान लीजिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो देन वी डोंट हैव टू जस्ट कंसिडर द साइंस ऑफ दीज चार्जेस बिकॉज वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. The sign of the charge, that positive or negative, that is, for example, an electron. An electron is represented by minus E, where E is the charge on the electron. So this minus basically tells us that this is a negatively charged particle. ठीक है. प्रोटॉन क्या होता है, इसको हम प्लस ई लिखते हैं. सो इसका दोनों का चार्ज बराबर ही है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम. बट ये हम बताते हैं कि दिस इज अ प्रोटॉन विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. वेयरएज बट जब हम कभी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, द मैग्नीट्यूड बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल, देन वी इग्नोर द साइंस. सो F इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon q1 q2 mod q1 mod q2 mod divided by r square, where r is the distance separating these two charges. Epsilon क्या है? This is the absolute permittivity of a medium. Epsilon r क्या है? It is the relative permittivity of the medium. और एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस. वैक्यूम और फ्री स्पेस. सो हियर दिस फॉर्मूला therefore becomes 1 by 4 pi एप्सिलॉन की जगह हम लगा देंगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर q1 Q2 divided by r square. ठीक है. Now in the free space or in the vacuum, the value of relative permittivity, that is the value of relative permittivity of vacuum is equal to 1, and the relative permittivity of the free space is also equal to 1, that is almost equal to 1, that is 1.0006 I think. So रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है आपके वैक्यूम में या फ्री स्पेस में वो होती है 1. तो ये हमारी 1 हो जाएगी. ठीक है. तो हमारा जो फॉर्मूला है तो F कितना हो जाएगा फ्री स्पेस में या वैक्यूम में 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. So this is the formula which you will find in your books. Why? Because we are considering that we are considering the point charges to be existing in the free space or in the vacuum. अगर वो किसी दूसरे मीडियम में है, if those point charges are existing in some other medium और उनका relative permittivity उस मीडियम का कुछ और है, that is for example अगर मैं लूँ मान लीजिए किसी एक मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है, लेट्स से मैं कहता हूँ लेट्स से इट्स 1. जस्ट आई एम अज्यूमिंग इट्स लेट्स से 1.1. सो उस केस में मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन यहाँ, ठीक है. तो अगर यहाँ पे दोनों चार्जेस पॉजिटिव है
तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा। अगर दोनों चार्ज, एक चार्ज नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो आपका इट विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। सो आर की वैल्यू हो गई 1.1 इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square. So the formula, अगर अब now this is the force of attraction or repulsion in a medium between the 2 point charges where the relative permittivity was 1.1. ठीक है? So this formula is very important for you. You have to remember it, and sometimes you can get the questions based on this formula also. You may be asked to find the relative permittivity of a medium or the absolute permittivity of the medium using this formula. ठीक है? So this is a very important formula, and the actual force of attraction between the 2 point charges is this, where epsilon is equal to epsilon naught dot epsilon r. Relative permittivity for vacuum or free space is 1, so therefore the force of attraction in vacuum or free space is given by this formula. ठीक है? और बाकी whereas अगर मीडियम चेंज हो जाता है और उसकी अगर रिलेटिव परमिटिविटी कुछ और है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, जैसे किसी मीडियम का अगर रिलेटिव परमिटिविटी 1.1 है, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1.1 यूजिंग दिस फॉर्मूला Q1 Q2 by R square. ठीक है? सो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ के ऊपर बात। और नाउ परमिटिविटी की बात यहाँ पर आई थी अभी, तो परमिटिविटी की जो डेफिनेशन है वो एक बार मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। दी permittivity of any medium is the capacity or the ability of that medium to permit the electrical fields through it. Now the permittivity is basically related to the amount of energy which is stored in an electrical field, and it is also related with the capacitance of a capacitor. So we will be discussing about this topic in the future lectures. But as of now, since we are dealing only with the Coulomb's law, so now the next topic will be the how we represent the Coulomb law in the vector form. So I am just here taking this with the help of an example. Let us say there is a charge Q1 and this is a charge Q2. Now, before proceeding further here, in physics we define the position of any object with the by taking the reference of this Cartesian frame of reference, which consists of the three axes, the x-axis, y-axis and z-axis, and the time. Now here the intersection of these three axes is called the origin. So we will be using this Cartesian frame of reference to define the position of any object in space. So now I will be just taking here, for example, this is the point O, this is the point of intersection of those three axes, which is called the origin. Now here you see now let us say the position vector of this charge Q2 is R2 and the position vector of this charge Q1, that is with reference to this origin, is R1. ठीक है, ये इसका so R, अच्छा मान लीजिए इसके coordinates, let us say these two charges are in the xy plane. ठीक है, तो इसके coordinates हो सकते हैं let us say x1 y1, इसके हम हो सकते हैं let us say x2 y2. ठीक है, तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है R1, this will be equal to x1 I. What is I? I is the unit vector along the x-axis. ठीक है, and y1 j, this is the unit vector along the y-axis,
एंड R2 का क्या पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, R2 विल बी इक्वल टू x2i प्लस y2j. ठीक है. So the position vector which is defining the position of Q1 and Q2 is given here. R1 vector is defining the position of Q1 and R2 vector is defining the position of Q2. Now let us consider this point as A and this is point as B. ठीक है. Now the vector along the direction, vector from, or you can say vector along AB, that is from A to B, will have the direction in this way, that is the arrow will be here. ठीक है. That is the vector along AB, that is from A to B, will be pointing in this direction, and the vector along BA, that is from B to A. ठीक है. This will be pointing in this direction. Now the force on Q1 due to Q2 किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा. It is both the charges are positive, so ये direction it will be there where repulsive force होगा. तो ये now by convention the force on charge Q1 due to Q2 is written as 1 2, and by convention the force on charge Q2 due to Q1 is written as 2 1. This will be acting in this direction and this will be acting in this direction, and the vector along AB, that is from A to B, will give you the direction of this force, and the vector along BA from B to A, it will this vector will be having the direction, this vector will be having this direction. ठीक है. So that this vector, that is vector along the BA means that is from B to A, will be giving the direction of this force, that is F12. So now let us find the value of this vector along AB and BA. So let us let's say the vector along AB, हम इसको लिख लेते हैं. Let us say for the sake of our convenience, that is vector along AB. Let us say इसको मैंने ले लिया है R dash. ठीक है. तो vector along AB means इस direction AB. Now we will use the triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition में क्या हो जाएगा ना, ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, और ये जो पोजीशन वेक्टर है R2 ये इधर है. ठीक है. तो पोजीशन वेक्टर R2 will be is pointing in this direction, position vector R1 is pointing in this direction, and the so this vector plus this vector, that is the vector along AB, that is R. ठीक है. ये आपका क्या होगा, इसको हमने मान लिया R dash. It implies that this R dash plus ये जो vector है R1, ठीक है, will be equal to what, this vector R2. As per the triangle law of vectors, this plus this will be equal to this. So R dash vector जो है वो मेरा कितना हो गया, R2 minus R1. Now by convention we write this R2 minus R vector as R21 2 1. ठीक है. तो ये वाला वेक्टर आपका हो गया, that is R dash will be equal to R21. ठीक है. And the magnitude of this vector will be written as magnitude of this vector will be taken as R21. ये magnitude हो गया.
सो अगर ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, सो नाउ this vector is basically along AB, that is it is giving you the direction of the force F21. So force F21 in the vector form will be equal to K. Now these two charges are in free space, ठीक है. तो हम यहाँ पे हमने क्या किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने जस्ट K लिख लिया है, और ये हो जाएगा आपको Q1 Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड है R21 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू द यूनिट वेक्टर. द यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू R⁻21. द यूनिट वेक्टर जैसे I का क्या होता है, I कैप इट, और व्हाट इज द मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिट वेक्टर. द यूनिट वेक्टर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, ठीक है. इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, इट डजंट हैज एनी वैल्यू, ओ सॉरी एनी यूनिट. इसकी वैल्यू 1 होती है और यूनिट इसकी कोई भी नहीं होती है. एंड द पर्पस ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर. नाउ यहाँ पे एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसके मैग्नीट्यूड हो जाएगी, एंड दिस इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स. सिमिलरली F12 क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको हो गया. नाउ द वेक्टर अलोंग BA क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा. सो उस केस में हमारा, अगर हम कहते हैं कि लेट अस से द वेक्टर अलोंग BA, अब मैं इसको मान लेता हूँ लेट अस से R'. सो दिस वेक्टर दैट इज R2 प्लस R', R2 वेक्टर प्लस R' इज इक्वल टू R1, ठीक है. दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. तो R' वेक्टर कितना हो गया, R1 माइनस R2. बाय कन्वेंशन हम इसको लिखेंगे R12, एंड दिस वेक्टर will give you the direction of the force, that is F12, that is the force on Q1 due to Q2, ठीक है. So force F12 कितना हो जाएगा, K वैल्यू सेम रहेगी, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, बट यहाँ हम लिखेंगे R12 होल स्क्वायर इनटू द यूनिट वेक्टर दैट इज R12, ठीक है. So this is the magnitude of the two forces which are acting on these two charges, that is Q1 and Q2. But now these two forces, they are acting in the opposite direction. This F12 is acting in this direction and F21 is acting in this direction. The magnitude of both these two forces are equal, but their direction are just opposite. So we can say that F21 vector is equal to minus F12. ठीक है. So this is how we write these force in the vector form. And here the most important thing which I just wanted to emphasize on is that apart from just writing or understanding how this force is written in the vector form, you should also know how to write the position of any object in terms of position vector. यहाँ पे वो मैंने आपको अभी जस्ट एक बताया है कि हर एक ऑब्जेक्ट फ्री स्पेस में their position is defined with the help of the Cartesian frame of reference, which consists of 3 axes, and their intersection of those 3 axes is called the origin. तो यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर भी आपको निकालना आना चाहिए कि क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर और क्या होगा पोजीशन वेक्टर आपका Q2 का. So this is how we write this Coulomb force in the vector form. And now let us move on to the next topic here, that is the principle of superposition. Principle of superposition जो है ये कहता है कि अगर that is the resultant
force on a charge due to the number of charge in its vicinity is equal to the sum of vector sum. यहाँ मैं लिखता हूँ vector sum of all the forces due to the individual charge, sum of all the forces, vector sum of all the forces due to the individual charge, sum of all the due to the individual charges on that charge. ठीक है. The resultant force on a charge due to a number of charges in its vicinity is equal to the vector sum of all the forces due to the individual charges on that charge. That is फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है मेरा Q, यहाँ पर एक कोई Q1 है, यहाँ पर आपका कोई Q2 है और यहाँ पे कोई है आपका Q3 है. ठीक है. ना इनका डिस्टेंस इन दोनों के बीच में R1 ले लिया मैंने, इसको R2 ले लिया और ये ले लिया R3. तो इसकी वजह से अगर ये दोनों सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इनका फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया आपका, लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ F3. इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर हो गया आपका F1 और इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया आपका F2. ठीक है. सो दी रिजल्टेंट फोर्स जो है F, दैट विल बी दी वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3. ठीक है. ये आपका वेक्टर सम हो गया. और अगर हमें अब इन तीनों फोर्सेस का हमें जो है मैग्नीट्यूड, दैट इज द रिजल्टेंट जो वैल्यू है हम जो निकालेंगे, वी विल फॉलो दिस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ दिस वेक्टर एडिशन. ठीक है. जो हम लोगों ने वेक्टर्स में दो टॉपिक्स हैं, दैट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स है और दूसरा आपका है दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. So that is the parallelogram law of vectors में क्या है, with the help of that law we can find the resultant value of these three forces acting on this particle Q. ठीक है. So वो हम जो है we will try to understand this principle of superposition with the help of few questions, and that will be taken in the next lecture. And so thank you very much for joining this session, and very shortly I will be uploading this lecture number 4, in which we will be discussing 2 or 3 questions based on the principle of superposition. So thank you very much, and have a nice day.